reason behind it. If someone is doing that because they have no lawful justification, you can file a lawsuit against them and try to ensure that you win back some damages. The force used need not have caused any actual hurt. That does not mean ki you should have some kind of a proof ki, see, like I have the impression of 5 fingers on my face to show that I've been slapped. It does not need the fact that you have been actually hurt. Even if someone has held your collar and you do not actually face any sort of a physical injury, still then there will be a viable case for battery, and you can win your damages back. Throwing water on a person, so only the proof of physical contact is needed in the case of battery, which is the first tort that we are going to study about today. So here another example that I'm citing is, for example, if certain premises are there where people are not allowed to enter, it can be your own private property. So you can use your force to oust the trespassers from certain premises. That is justified. But also it should not be more than necessary to repel the invasion. Let's say someone had by mistake stepped onto your porch, let's say your house, the garden area. You know that it's a private property, but you cannot just start shooting someone because of that, right? It may be necessary to repel them, but you must do so in a proportionate manner. The next line we're going to read about is harm which is caused without intention or accidentally is not actionable unless it is willful or negligent. Let's say you have gone with a gang of friends to a forest and आप लोग सब shooting practice कर रहे हो. Shooting practice in the sense कि पुराने जमाने में भी करते थे, tigers and all को shoot, राजा महाराजा. So in your shooting party, if कोई member shot fire कर रहा है किसी bird पे, so of course they do not intend to harm you. बट अगर फायर करते वक्त गन का पेलेट, मतलब उस बुलेट का पेलेट जो निकलता है वो किसी fellow member को injure कर दे रहा है, then in that case a lawsuit filed to attain some compensation under battery will not work. Why wouldn't work? Because there the harm is caused without any intention or accidentally, so that's not actionable. The next point we're going to read about is justified use of force. So in some examples the use of force is justified and allowed, and there will be no viable case for battery there. For example, first one is force feeding a prisoner on hunger strike to save his life, or performing an operation on an unconscious person by a competent surgeon to save the former's life. See, अगर कोई prisoner बैठा है कि नहीं, I will not have any sort of food, and वो hunger strike पे बैठा है, and you know कि लोग starvation से मर सकते हैं, there the government or the prison ward, whoever is there, they can force feed the prisoner, which is the use of force that is justified to save his life. और फॉर एग्जाम्पल आप अगर बेहोश हो गए हो और आपको कोई अर्जेंट सर्जरी की जरूरत है, द डॉक्टर और द कॉम्पिटेंट सर्जन हु फाइंड्स यू कैन परफॉर्म एन ऑपरेशन ऑन यू टू सेव योर लाइफ. दैट इज अनदर एग्जांपल ऑफ जस्टिफाइड यूज ऑफ फोर्स. सो ऐसे कुछ एक्सेप्शंस हैं जहां पे बैटरी नहीं फाइल की जा सकती. और एक डिफरेंस, क्रूशियल डिफरेंस है बिटवीन असॉल्ट एंड बैटरी. द नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट असॉल्ट, बट यहाँ पे मैं बस एक एग्जांपल देके इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ. लेट्स से आप खड़े हो और आपकी तरफ कोई मतलब filled with anger and rage is approaching you with a clenched fist. So आपके मन में एक डर पैदा हो रहा है कि oh my god, I'm going to be I will have to face some sort of a physical force which I don't want to, and that force has no lawful justification either. So आपके मन में जो डर और apprehension पैदा हो रहा है, that is the case of assault. अगर वो जो भी आ रहा है आपकी तरफ अटैक करने के लिए, आपको actually अटैक ना भी करे तब भी असॉल्ट का केस फाइल किया जा सकता है, राइट? लेकिन जब तक वो आपको सच में पंच या स्लैप नहीं करता तब तक बैटरी का केस नहीं फाइल किया जा सकता. असॉल्ट एंड बैटरी में यही डिफरेंस है. लेट्स टॉक अबाउट व्हाट असॉल्ट entails. So assault says when the defendant does something that causes a reasonable apprehension of battery in the mind of the plaintiff. Again, the person who files the case is the plaintiff, जिसके अगेंस्ट फाइल किया गया है, जिसको खुद के एक्शंस को डिफेंड करना पड़ता है. दैट पर्सन इज द डिफेंडेंट. सो अगर उस डिफेंडेंट में ऐसा कुछ किया है जो एक रीजनेबल एप्रीहेंशन या डर पैदा करे, और तुम एक्सपेक्ट करो कि शायद मेरे साथ बैटरी होने वाली है, इन द सेंस कि कोई आपको फिजिकली कांटेक्ट करके आपको आपके ऊपर अगेंस्ट फोर्स यूज करने वाला है, दैट इज द केस ऑफ असॉल्ट. ही डज नॉट हैव टू एक्चुअली हिट यू फॉर इट देयर टू बी एन असॉल्ट. Whereas in layman's terms, normally ordinary life में हम assault तभी बोलते हैं जब ऐसा कुछ होता है, मारपीट होती है, तब बोलते हैं I have been assaulted. But actually अगर आपकी तरफ कोई गन भी पॉइंट करे, आपको पता ना हो कि उस गन में बुलेट्स है या नहीं, अगर ना भी हो लेकिन आपके मन में एक डर आया कि I am going to be shot dead, then that is also a viable case of assault. The person causing the assault may have the intention to commit assault or battery, or the physical capacity to commit battery.
So the threat that is carried by the assaulter's actions to the mind of the assaulted completes the tort. Either जो आपकी तरफ ऐसा कुछ बिहेवियर दिखा रहा है, that person may have the intention to commit assault. सिर्फ assault सिर्फ मतलब कि आपको कोई डराना, लेकिन वो आपके अगेंस्ट बैटरी भी सच में कर सकता है, मतलब इंटेंशन टू डू दैट, बैटरी इन द सेंस कि आपको सच में हिट करना, या फिर एटलीस्ट दैट पर्सन हैज द फिजिकल कैपेसिटी टू कमिट इट, इसीलिए तो आप डरे हो, राइट? यू नो दैट पर्सन कैन फायर द गन एंड द बुलेट कैन हिट यू, दैट इज व्हाई यू आर अफ्रेड. सो दिस थ्रेट व्हिच इज कैरिड बाय उनके एक्शंस टू आवर माइंड्स जो असॉल्ट हो रहे हैं, दैट इज व्हाट कंप्लीट्स द टॉट. If a man on a hospital bed with plaster all over his body shakily lifts his broken hand, I mean, see, वो ऐसी condition में है कि you know कि that person does not have the physical capacity to commit battery against you, and still he says I have the ability to इसलिए वो सिर्फ assault के अंडर वो आप उस अगेंस्ट केस नहीं फाइल कर सकते, because the person obviously does not have necessary means to carry out that act, whichever act he is threatening against you. So अभी तक किसी को कोई डाउट है assault या बैटरी में confusion है? You can go ahead and ask your doubts. All right. So if no one has any doubts, we'll be talking about a particular case. जहाँ R versus George में he or she shows the unloaded pistol towards the
Hi everyone, I'm so sorry for the technical problem. Can you hear me right now? I kept on teaching thinking that I was audible, and I kept asking a few questions and no one really replied. So that's why I came back to check if I was audible or visible or not. So yeah, I'm so sorry for that. I'll start my sharing screen again. So can you tell me up to what point you were, hearing me? Like, did you hear me talk at all about battery or assault? You can Yeah, unmute and talk. audible Yeah. until the I guess the gun case. I don't remember the case All right. name. So we were talking about assault and battery ka distinction. You were able to hear completely about battery, and now we'll talk about assault, right? Yeah. All right. So I'll just quickly recapitulate again. I kept on teaching and I went to false imprisonment as well. So yeah, 1 second. So is my screen visible right now? If you can just quickly confirm. Music. All right. So I'll just get started soon. Wait. Now, so we'll just quickly talk about this one. 1 second. Yeah. Can you see the screen where assault is talked about? Yeah. Anyone? Yeah, it's a, Okay. So we talked about this case of battery, right? You were able to hear everything, I hope. So battery is where there is an actual physical contact and some kind of a force has been applied against you without any lawful justification. Whereas assault only requires a reasonable apprehension of battery. In the sense कि आपके against कोई threat आपके मन में पैदा हो रहा है कि आपके against कोई physical danger हो सकता है. So as soon as there is a reasonable apprehension या reasonable डर in your mind कि मेरे against कोई force use हो सकता है, मेरे against battery होने वाली है, that case becomes of assault. So usually in layman terms we always think कि assault means कि अच्छा मतलब कोई actually मारपीट हुआ है and उसको हम assault बोलते हैं. Whereas in this case assault is actually in legal terms where there is a simple apprehension of danger in your mind. Let's say आपको कोई धमका रहा है गन दिखा के, even though that person has not yet fired the bullet, that will still be classified as a case of assault because there is a reasonable apprehension. एक तुम्हारे मन में डर आ गया है कि I can be shot at any moment now. So this is that threat which is carried by the assaulter's actions to our mind, जिसके against assault हो रहा है, which completes the tort. जो पर्सन आपको ऐसे धमका रहा है, मे बी उसका पास इंटेंशन है सिर्फ धमकाने को, दैट मींस ओनली असॉल्ट तक जाने को, या फिर द इंटेंशन इज एक्चुअली टू कमिट बैटरी और द फिजिकल कैपेसिटी टू कमिट बैटरी है उसमें. दिस इज वेयर दिस पॉइंट कम्स इनटू व्यू. अगर कोई आदमी जो हॉस्पिटल पे गिरा हुआ है and he has plaster all over his body, he obviously cannot move himself much, shakily lifts his broken hand and says I'll bash you up, it would not constitute assault since the man has no ability to inflict harm, because आपको पता है कि वो आपके अगेंस्ट वैसा कुछ नहीं कर सकता. So of course that would not be a case of actual assault, right? So that is something you have to keep in mind. So I'll be asking a few questions in the meantime. So this was to ensure that everyone can hear me. All right. So now we're going to talk about R versus George, a specific case. Before that, can anyone tell me if you have any doubts about assault and battery car difference? A simple yes or no would also suffice. Yes, guys. Yeah. I hope you can hear me. All right. So I'll just keep on. So we talked about assault and battery ka difference. Now we'll look at a specific case, R versus George. The defendant shows the unloaded pistol towards the plaintiff as if it were loaded and created an apprehension that it would cause injury to him. See, pistol में कोई भी bullet नहीं है. That means it's unloaded and it cannot cause any harm to you. But as soon as that person is pointing it towards you, and if you do not really know कि उसमें bullets है या नहीं, तुम्हारे दिमाग में there is an apprehension कि शायद इससे मुझे injury हो. So that becomes a clear case of assault.
The test is whether an apprehension has been created in the mind of the plaintiff that battery is going to be committed against him. अगर तुम्हें पता है कि वो पिस्टल में कोई भी बुलेट नहीं है, then there is no assault. Because of course आपके दिमाग में कोई reasonable danger का sense आ ही नहीं सकता अगर आपको पता है कि बुलेट नहीं है. So you know कि there can be no chance of injury. So there, in that case, there will be no assault. It is also essential that the plaintiff has to prove there is a prima facie case against the defendant. Can anyone tell me what this phrase prima facie means? Guys, let's make this interactive. I hope to have good participation from you. First Yeah, does anyone impression, know I what the... guess. Yeah, very good. So prima facie means on the face of it, या फिर कोई भी ट्रायल या केस को इन डेप्थ कोई लेने से पहले you must establish the fact कि वैसे कोई valid grounds हैं for this to proceed. So here the plaintiff has to prove कि first of all एक case exist करता है जिसमें कोई valid argument है against the defendant. Mere verbal threat is not assault unless it creates reasonable apprehension in the plaintiff's mind that immediate force will also be applied. Just like यहाँ पे एक merely ये verbal threat था, it did not carry any weightage behind it because the person who is threatening you is someone who does not have the physical capacity to commit that battery. So here in this case, there will be no assault. So I hope everyone is clear between the difference between assault and battery. Now we'll be talking about false imprisonment. In simple terms, it means कि कोई आपको कैद करके रख रहा है against your consent without any lawful justification. कोई reason नहीं है आपको restrain करने का. This means imposition of total restraint on the liberty of a person for however short a time, चाहे वो 5 मिनट भी क्यों ना हो. Once your rights of freedom and liberty have been violated, that person who has done this is liable to pay you damages for it. So इधर हम पढ़ेंगे दो चीजें, क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ. अभी तक टॉर्ट्स जो है इट्स अ सिविल रॉन्ग, राइट? सो उसमें क्रिमिनल लॉ की चीजें नहीं होती हैं. लेकिन इधर क्या होता है ना, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट आल्सो फॉल्स इन क्रिमिनल लॉ in terms of two separate crimes. What are they? One is wrongful confinement, the other is wrongful restraint. अगर कोई पर्सन आपको रिस्ट्रेन कर रहा है आपकी फ्री मूवमेंट को टोटली, इन द सेंस कि आपको एक कमरे में फेंक दिया गया, आपको किसी भी डायरेक्शन में जाने के लिए अलाउड नहीं किया गया है, that means the imposition of your restraint is total. If you're prevented from going out of certain limits, it was a crime of wrongful confinement. लेकिन अगर रिस्ट्रेंट पार्शियल है, फुल और पार्शियल दोनों के लिए आप एक्शन ले सकते हो. अगर फुल हो तो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के लिए एक्शन लोगे, पार्शियल हो तो रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट के लिए आप एक्शन लोगे. पार्शियल कैसे? फॉर एग्जांपल, आप अगर जा रहे हो सीधे रास्ते में और आपको कोई स्टॉप करके ऑब्स्टिकल लाके बोलता है कि आप बियॉन्ड दिस लिमिट यू कैन नॉट गो इन दिस डायरेक्शन. He or she is restraining your movement in a particular direction alone. मतलब आप पीछे घूम सकते हो, आप किसी और डायरेक्शन में जा सकते हो. So that case is called a wrongful restraint under IPC, मतलब क्रिमिनल लॉ. बट अंडर सिविल लॉ अगर सिर्फ फुल रिस्ट्रेंट है, टोटल रिस्ट्रेंट है, तभी वो to false imprisonment होगा. Unless it is a total restraint, it is not false imprisonment. वो constitute करने के लिए therefore a person must have been completely deprived of his liberty to move beyond certain limits. मतलब completely आपको कोई allow ही नहीं कर रहा है. अगर आपके पास कोई एस्केप रूट है, मतलब आप वो आपको अलाउ नहीं कर रहा रूम से बाहर निकलने के लिए, लेकिन आपके पास चाबी है, राइट? सो यू कैन एक्चुअली टेक योरसेल्फ आउट ऑफ द रूम. सो इफ यू कैन डू और रिसोर्ट टू एन एस्केप राउट where you do not face any risk of life or injury. ऐसा नहीं बोल सकते कि चाबी है लेकिन डोर के सामने गन पकड़ के लोग खड़े हैं. That means of course you cannot escape without risking your life. That is why that will be a valid case of false imprisonment. लेकिन अगर आपके पास कोई escape route है, then of course you cannot maintain a claim of false imprisonment. Say if a person is confined to a room on the 10th floor of a building with his windows open, such restraint would still be total restraint. आप ये नहीं बोल सकते कि अच्छा विंडो तो खुला है तुम वहां से आ क्यों नहीं गए? Because of course if you are jumping from the 10th floor, that will be dangerous for you and you have the risk of life and injury. So that will also be false imprisonment. The retention of a person can be actual, that is locked in a room physically, or constructive, someone pointing a gun and saying don't move. एक्चुअल रिस्ट्रेंट मतलब क्या है? आपको कोई रूम में फिजिकली बंद कर दिया गया है, सो योर डिटेंशन इज एक्चुअल, तुम सच में नहीं जा सकते. कंस्ट्रक्टिव डिटेंशन का मतलब क्या होता है? सी टेक्निकली तो तुम्हारे पास फिजिकल कैपेबिलिटी है मूव करने को या कहीं जाने को, लेकिन तुम्हारे तरफ कोई गन पॉइंट करके बोला है कि डोंट मूव. That means it is also a sort of false imprisonment. The period of retention is usually immaterial, चाहे वो 5 मिनट के लिए हो या 5 दिन के लिए हो. Does anyone have any doubts with regard to this slide? If no, can you just please say no? Yeah, I would love to hear your voice to ensure that I'm actually audible. No. Very good. Thank you.
So we'll move to another torts, which is called defamation. Okay, so this was a case where Rahul Gandhi was convicted for 2 years, and then that was criminal defamation, and he was disqualified from parliament. So defamation is something that is also a crime, but it can also be classified as a tort, right? So there are two forms of defamation: criminal or civil. We'll talk about the civil aspects here. Any intentional false communication, either written or spoken, that harms a person's reputation, decreasing the respect or regard, or inducing hostile feelings against him in the eyes of right-minded members of society. So defamation का मतलब ये है, अगर कोई आपकी अगेंस्ट, मतलब अगेंस्ट इन द सेंस कि आपकी रेप्यूटेशन खराब करने वाला, या फिर आपके लिए जो सोसाइटी में रेस्पेक्ट है उसको घटाने के लिए, या फिर दूसरों को आपके अगेंस्ट भड़काने के लिए, दूसरों इन द सेंस कि जो भी रीजनेबल लोग हैं सोसाइटी में, जो राइट माइंडेड हैं, जो गुड मोरल्स के हैं, उनके दिमाग में आपके लिए जो रेप्यूटेशन है, अगर कोई आप वो उसे खराब कर रहा है, और यूजिंग व्हाट, यूजिंग सम काइंड ऑफ अ फॉल्स कम्युनिकेशन, आपके अगेंस्ट कोई फॉल्स एलिगेशन रेज करके. So that is the case of defamation. Mere hasty expression spoken in anger or verbal abuse to which no hearer would attribute any set purpose to injure character would not be actionable. इसका मतलब क्या हुआ? सी, अगर कोई आपके अगेंस्ट, मतलब आप ऐसे फाइट कर रहे हो किसी के साथ, एंड कोई आपको वर्बली ऐसे गाली दे देता है एंड बोलता है कि इट ही और शी रेजेस क्वेश्चंस अगेंस्ट योर कैरेक्टर, but that is something which is obviously happening because you are in the midst of a fight. So that's a hasty expression, वो thoughtfully उस पे कुछ दिमाग यूज करके नहीं बोला गया है. So that is why this is spoken in anger or this is verbal abuse, जिसको कोई भी दूसरा या सॉरी तीसरा आदमी, एनी थर्ड पार्टी, would not actually believe it. They would know कि ये सिर्फ गुस्सा हो कैसा बोल रहा है. So if anyone else is not attributing any set purpose to injure the character, that case में defamation नहीं होगा and it would not be actionable. So 3 requirements हैं defamation case satisfy होने के लिए. These are the requirements are, the first one is the statement must be defamatory. मतलब intention to defame is not necessary. ऐसा नहीं है कि intention होना चाहिए कि वो defame ही करे. इंटेंशनल का मतलब मतलब वो डेफिनेशन जो लिखा है ना फर्स्ट लाइन में, उसका मतलब ये है कि जो भी वो कम्युनिकेशन कर रहा है वो अपने फ्री कंसेंट से कर रहा है, एंड वो फॉल्स कम्युनिकेशन इंटेंशनली कर रहा है. लेकिन ये इंटेंशन नेसेसरी नहीं है कि वो डिफेम करने के लिए करे, चाहे वो मतलब सोच रहा हो कि अच्छा मे बी द स्टेटमेंट आई एम मेकिंग इज राइट, बट एज लॉन्ग एज इट इज एक्चुअली फॉल्स, द केस फॉर डेफेमेशन स्टिल एग्जिस्ट्स. So there's another thing we talk about here. It's called innuendo. Before that, we'll just read this line. A statement may be prima facie defamatory, and that is so when its natural and obvious meaning leads to that conclusion. कभी कभी जो स्टेटमेंट है डेफेमेशन के लिए वो क्लियरली मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर में डेफेमेटरी है, नेचुरली एंड कोई भी ऑब्वियसली उसके मीनिंग को समझ के यही कंक्लूजन पे पहुंचेगा. समटाइम्स जो स्टेटमेंट दिया गया है वो ऐसे ऑन द फेस ऑफ इट लगेगा कि वो इनोसेंट है, शायद मतलब it's not meant to mean anything else, but of course there is some latent or secondary meaning which may be considered to be defamatory. This is what is called an innuendo. When the natural and ordinary meaning is not defamatory, but the plaintiff wants to bring an action for defamation, he must prove this latent or secondary meaning. कोई मतलब आपको कोई ऐसे कटाक्ष कर रहा है या वैसे कुछ जोक टाइप सा बोल रहा है जो कि ऐसे इनडायरेक्ट मैनर में आपकी रेपुटेशन ही खराब कर रहा है, तो आपको वो प्रूव करना होगा कि सच में वैसा कोई मीनिंग है. दैट इज व्हाट इट मींस. सो द स्टेटमेंट मस्ट बी डेफेमेटरी के अंदर ये एक नोट करने वाली बात है. The second point is the statement refers to the plaintiff. See, अगर defamation का केस तुम्हें फाइल करना है, it must be the fact that जो भी आपके अगेंस्ट कुछ बोला है, he must have spoken against you specifically. अगर आपको कोई direct reference ही नहीं है, then you cannot sue for it. However, when the defamation refers to a class of persons, no member of that group can sue unless he can prove that the words can be reasonably inferred to refer to him. Let's say I say कि all the teachers of XYZ school are incompetent, ऐसा बोल दिया मैंने, तो कोई स्पेसिफिक टीचर आके मुझे नहीं तब तक वो कर सकता बिकॉज आई हैवंट रियली स्पोकन अबाउट देम. आई एम रेफरिंग टू अ क्लास ऑफ पर्संस. सो आई से कि all doctors are corrupt. No particular doctor can file a case against me for defamation because no member of that group can sue unless he can prove कि मेरे words reasonably उससे infer मतलब refer कर रहे हैं, right? तब तक वो नहीं कर सकता. This is the second aspect and a note with it. The third requirement is this statement must be published. Meaning अगर हम दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं और I said something defamatory to you,
दैट वुड नॉट मीन डेफेमेशन हो गया है, बिकॉज मैंने सिर्फ तुम्हें ही बोला है, किसी और के नजरिए में तुम्हारी रेपुटेशन को कोई फर्क नहीं पड़ा है अभी तक. So of course the statement must be published, meaning a third party knows. If someone calls you a liar or thief in private, it has not been published. If someone wrongfully reads a letter intended for only for the plaintiff, there has been no publication. See, agar let's say I sent you a letter, राइट, उस लेटर में मैंने सारी चीजें लिखी हैं कि वाई आई डू नॉट लाइक यू, वाई यू आर सच अ बैड पर्सन, एंड सारी सारी फॉल्स एलिगेशंस लिखी है, लेकिन आई ओनली इंटेंडेड द लेटर टू बी रेड बाय यू. सो अगर कोई और रॉन्गफुली उस लेटर को मीनवाइल उठा के पढ़ लेता है, दैट इज ऑल्सो बिन नो पब्लिकेशन, बिकॉज आई डिड नॉट एक्चुअली इंटेंड फॉर अदर पर्सन्स टू नो अबाउट इट. So is everyone clear with the three requirements of defamation? Yes, sir. Very good. Now we'll talk about two kinds of defamation. There can be either libel or slander. What does that mean? So slander का मतलब होता है spoken defamation. Let's say मैं speech दे रहा हूँ and उसमें मैं I have called out a few people, I've raised some false allegations against some people, which is of course injurious to their character or reputation. But libel का मतलब होता है written or published defamation. Let's say newspaper article या किसी magazine में I've written about someone जिससे उनका reputation मतलब it's getting harmed. So libel becomes a permanent record, जबकि slander has a transient nature. Transient meaning temporary. सिर्फ कुछ मतलब for few seconds only everyone is hearing it. After that there is nothing about it. So libel typically involves media or publishing. I think you may have heard of this case, Prince Harry and Meghan Markle. So there were a lot of various rumors about them in the British media. So Britain is infamous for its tabloids, which are very infringing on your right to privacy. So they had filed this case of libel against them for defaming them and saying false rumors about them, spreading about them. And this kind of misinformation can be combated with the help of defamation laws. जबकि स्लैंडर में it often occurs only during conversation or speeches, of course, obviously. Libel is generally more serious legally. Slander is less severe than libel. Is everyone clear about the distinction between libel and slander? Both are types of defamation. This Yes, sir. distinction is made in English law. Yeah, All right. yeah. Yeah. So next we'll talk about a few examples. So देखो, Mr. X aware that his wife, Miss Y is illiterate. So Mr. X को पता है कि उसकी पत्नी पढ़ नहीं सकती, लेकिन he still chose to send her a letter accusing her to be a woman with loose character. So of course वो पढ़ नहीं सकती, तो वो लेटर लेके गई उसके नेबर के पास, जो कि उसे पढ़ा के सुनाया मिस वाई को. This will amount to publication, and if other factors are fulfilled, it becomes defamation. So as long as Mr. X knew कि उसकी wife पढ़ सकती है and तब वो भेजी, मतलब then that letter was sent, that would not be publication. But since he is aware that उसकी wife illiterate है, so the fact that he is sending this letter to her means कि he actually intends the letter to be read by a third party. And as long as मतलब as soon as any third person reads about it and comes to know about this defamatory statement, then you can say that the statement has been published and the criteria have been fulfilled. I will talk about a few defenses. So मतलब आपके against suppose किसी ने ये case file कर लिया defamation का, what can you do? How can you defend yourself कि नहीं मैंने वो सब वैसा कुछ नहीं किया है? The first factor which you can do is justification by truth. अगर आप ये prove कर दो कि मैंने जो भी statement दिया है, it is actually the truth, I spoke honestly, and this is not something of false statement, then you will be not allowed to be sued for defamation. So A tells the press that B, a government official, has been taking bribes from people to do the work he's supposed to do as the duty of a public officer. मतलब तुम्हें कुछ काम करना है नॉर्मली भी तुम्हारी ड्यूटी एज अ पब्लिक ऑफिसर, बट तुम उसके लिए ब्राइब्स ले रहे हो लोगों से. सो इफ यू आर एक्चुअली अक्यूजिंग समवन ऑफ दिस, but if that person is able to prove कि मैं जो भी बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ, then B cannot sue A if the statement is true. I hope you understood. In civil actions for defamation, the truth of the defamatory matter is complete defense. Under criminal law, merely proving that the statement was true is no defense. Under civil law, merely proving that the statement was true is a good defense. The reason for the defense is that law will not permit a man to recover damages in respect of an injury to character which he either does not or ought not to possess. So see, अगर ऐसा कोई कैरेक्टर तुम्हारे पास है या रेप्यूटेशन है जो कि तुम एक्चुअली डिजर्व ही नहीं करते हो तुम्हें पोजेस करना, सो अगर वो उसके अगेंस्ट कोई कुछ बोल के तुम्हें मतलब रेप्यूटेशन खराब कर रहा है,
with the reputation which you did not deserve in the first place, then of course the law will not permit that person to be punished for it, right? So that is why this defense is available. Criminal law mein wo kyun nahi hai, we'll talk about it when we talk about law of crimes, right? We are focusing on only the torts aspect in this chapter. Next, the second defense is fair comment. In some cases, you can claim कि ये fair comment था. Fair comment मतलब what? If you're making some kind of a comment about public interest which is fair, मतलब आप एक opinion express कर रहे हो, you cannot be sued against it. Let's say a newspaper published an article against a particular political party, उनको accuse करते हुए कि you are enabling communal polarization and you are instigating riots against religious minorities. ये न्यूज़पेपर आर्टिकल जो पब्लिश करा है, दे आर मेकिंग अ कमेंट. कमेंट का मतलब क्या होता है? एन एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन. सी, कमेंट का मतलब ये है कि यू आर नॉट एक्चुअली टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर फैक्ट, यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट कि XYZ इज दिस मेनी इयर्स ओल्ड, दैट विल बी अ असर्शन ऑफ फैक्ट्स. जबकि कमेंट का मतलब है आप एक ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहे हो, ये कमेंट फेयर है. व्हाट डज दैट मीन? फेयर मतलब you have validly researched about it and you have come out with this opinion. Matter commented upon must be of public interest. किसी के प्राइवेट जिंदगी के बारे में तुम कमेंट करके नहीं बोल सकते कि that was a fair comment. If you are only speaking about public interest, let's say here about the public interest of let's say societal harmony and minority rights, so इसके वजह से अगर तुम कुछ publish कर रहे हो article, that means you are making a fair comment and no political party or no other person can file a lawsuit against you to recover damages for it. If the facts are substantially true and justify the comment based on them, defense of fair comment can be taken, even if the certain facts cannot be proved. See, आप हर फैक्ट को प्रूव नहीं कर सकते जिसके बेसिस पे तुमने वो कमेंट दिया है. Perhaps some facts are substantially true and अगर वो facts justify कर दे रहे हैं वो comment देना, then this defense can be taken. Whether a comment is fair or not depends on the opinion of the commentator, whether they held the belief honestly or not. Like इधर for example, if the newspaper honestly believes कि नहीं हम सच बोल रहे हैं, this political party is actually responsible for this and that's why we have written this article, that means they honestly believe कि ये बात fair है and that is why this will be a fair comment. If you are someone जो कि बस speculation कर रहा है किसी husband और wife के relationship के बारे में, let's say about an actor and actress who are married, if someone is accusing that actor of being a cheating person, who cheats on his wife or engages in adultery without any actual facts to back you up, and you do not even actually know कि वो सच है या नहीं, बस तुम ऐसे ही बोल दे रहे हो, that will not be a fair comment, and of course that's also not in public interest either. So public interest का मतलब क्या है? अगर these are facts relating to administration of government, departments, public companies, courts, conduct of public men, let's say ministers के against तुम कोई case file कर रहे हो, जैसे कि मैंने बोला था ना कि कोई bribes ले रहा है public institution में, local authorities, वैसे ऐसे cases में bribes ले रहा है जहाँ पे वो actually वो task करना चाहिए ही by their statutory duty. They're legally bound to do so because that's their job. Public meetings, pictures, theaters, public entertainments, textbooks, novels, these are all considered to be matters of public interest. Is everyone clear about these two defenses, justification by truth and fair comment? Yes. Thank you. The next point we talk about is privilege. किसी किसी लोगों को actual एक privilege दिया जाता है to be exempt from proceedings about defamation. कौन से लोगों को दिया जाता है? If the privilege is accorded, that must be for judicial proceedings, parliamentary proceedings. Parliamentary in the sense कि सिर्फ national नहीं, similar privilege for state legislatures as well. State act communication, state communication मतलब ये है, let's say कोई भी government work करने के लिए बहुत सारे letters and all send किया जाता है, right? So that's state communication. Military or naval proceedings, these are the proceedings which have been granted absolute privilege from defamation. No action lies, even though the statement may be false and malicious in nature, since public interest demands in this case that reputation of individual give way to freedom of speech in such cases. So यहाँ पे priority freedom of speech को दिया जाएगा, taking into view public interest over reputation of an individual. So even though parliament में कोई member of parliament raises some kind of allegations against another MP which are false, which are malicious, which are intended to defame that person, तब भी you cannot file any lawsuit against them because when the parliament is in session, they are granted this privilege. I don't know if you've heard about it. There was a speech by Mahua Moitra where she invoked this privilege before when going on to accuse about some allegations, right? So unlike absolute privilege, defense of qualified privilege is also available. This is called absolute privilege. मतलब इस proceedings में judiciary मतलब कोई court में judge कोई opinion दे रहा है कि the government is doing this, और
कोई पर्टिकुलर मिनिस्टर के अगेंस्ट कोई ओपिनियन दे रहा है, तब भी यू कैन नॉट फाइल एनी ऑर्डर ऑफ सॉरी लॉसूट फॉर defamation. So apart from these proceedings which have been granted absolute privilege, some have qualified privilege. Qualified in the sense कि उसमें एक necessary condition है कि जो statement बताया गया है ना, that must be made without malice. Guys, can anyone tell me what malice means? MALICE. Intention to like I get your point. So intention, like yeah, it means like yeah. ill intention. Like you are intending कि Nullified ऐसा. intention. Very good. So here the case of qualified privilege comes into view. अगर वो statement चाहे वो false हो, but it must not be malicious in nature. मतलब जो बंदा वो statement कर रहा था, he did not actually do it to actually defame you. मतलब उसके दिमाग में वो मेंस या पढ़े होगे ना crimes and all में, वो नहीं था इसमें. So for such a defense to be available, it is further necessary that there must be an occasion for making the statement. To avail this defense, the defendant has to prove this following 2 points. कौन सा defense? Qualified privilege. Qualified privilege मतलब certain cases जिसपे conditions हैं, उसको conditions को satisfy करोगे तभी you will be able to avail this. जबकि इनमें absolute था privilege. The statement was made on a privileged occasion. It was in discharge of duty or protection of an interest, or it is fair report of parliamentary, judicial or other public proceedings. Let's say कोई newspaper analyze कर रहा है parliamentary session में remarks को, and they made some kind of a statement, right? So it was in discharge of a duty or public interest के terms में था. This is not the same as the above one. This means कि यहाँ पे the statement was false. ये फेयर कमेंट में वो फॉल्स या ट्रूथ की बात नहीं थी. फेयर था मतलब कि the person making it believed it to be true and it was something that is good for your public interest में था, and it must be an expression of opinion. यहाँ पे तुम facts भी बता सकते हो, लेकिन the statement must have been made on any kind of privileged occasion without any malice. तभी तुम्हें qualified privilege मिलेगा. Now we'll talk about a particular passage. I think it was from a particular sample paper of CLAT consortium or perhaps a previous year paper. I hope you can read about it. The bench of Dr. D.Y. Chandrachud and M.R. Shah, JJ, has refused to transfer to CBI the criminal cases lodged against Republic TV editor-in-chief Arnab Goswami for alleged defamatory news show telecast on April 21 in connection with the Palghar mob lynching case. So, इससे क्या समझे तुम? ये 2020 की बात है. अर्नब गोस्वामी के अगेंस्ट क्रिमिनल केसेस फाइल की गई थी. Why? Because he was accused of allegedly defaming people while reporting about a mob lynching case. The Supreme Court, what it did was कि वो CBI को transfer नहीं किया, and it also quashed all FIRs against Arnab Goswami except one which was filed in Nagpur. And what he did was कि the Supreme Court did कि वो सारे FIRs जो across the countries फाइल किए गए थे उनको ट्रांसफर कर दिया to Mumbai via an order dated this much. Delivering the verdict, Justice Chandrachud said, Article 32 of the Constitution constitutes recognition of the constitutional duty entrusted to this court to protect fundamental rights of citizens. ये बोला गया कि अर्नब गोस्वामी's exercise of journalistic freedom is at the core of speech and expression protected by Article 19(1)(a). The petitioner is a media journalist. The airing of views on television shows that he hosts that is in the exercise of his fundamental right to speech and expression. India's freedoms will rest safe as long as journalists can speak truth to power without being chilled by a threat of reprisal. Free citizens cannot exist when the news media is chained to adhere to one position. Yuval Noah Harari has put it succinctly in his recent book titled 21 Lessons for 21st Century. Questions you cannot answer are usually far better for you than answers you cannot question. So अभी तुम्हें question पढ़ के बताना है answer. The above passage mentions the journalist's request to transfer the case to CBI for investigation. What could be the appropriate reason for such a request? पढ़ के बताओ इनमें से कौन सा रीजन सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है कि वो क्यों चाहता था कि ये सारे जो इन्वेस्टिगेशंस हो रहे हैं वो सीबीआई को ट्रांसफर हो जाए. So I'll be reading the options. The CBI is a central investigating agency and conducts more scientific investigations. मतलब ये बोला गया है कि CBI because by virtue of being a central investigatory agency it conducts scientific चीजें, तो उनको दे देना चाहिए investigation का भार. Where the state government is an interested party, the investigation conducted by the state police may be biased. मतलब अगर वो state government ही खुद involved है किसी केस में, तो अगर वो स्टेट गवर्नमेंट के पुलिस इन्वेस्टिगेट करेंगे, so they may be biased about it.
The FIR is related to an offense of defamation of the president of a national party. So the matter should be investigated by the CBI or none of the above. बताओ कौन सा सबसे ज्यादा क्लोज लग रहा है? You can Is hear it me, right? true? Option 2, I guess. Okay. Yeah, very good. So here, the fact is that this was made, the request was made by the journalist because CBI is a central agency, जबकि the cases have been filed by the state governments. So अगर investigation state police करेगी, तो वो biased हो सकता है, and इसलिए वो transfer किया गया है. I know this was not exactly related to defamation, but I just found the paragraph from CLAT 2020, I guess. So that's why I wanted to include it here. Here, the next question says the above passage quotes the observation of the court about freedom of speech and expression. Now, based on such observation, choose the most appropriate option which describes the scope of such questions. See, questions यहाँ पे क्या बोला गया है? Questions you cannot answer are better than questions. Actually, आंसर्स होना चाहिए. Answers you cannot question. इसका मतलब ये क्या है कि ऐसे प्रश्न रेज करना जिसके लिए तुम्हारे पास आंसर्स नहीं है, that's actually better देन आंसर्स यू कैन नॉट क्वेश्चन. मतलब ऐसे आंसर्स जो दिए गए हैं जिसको तुम क्वेश्चन करने के लिए तुम्हारे पास राइट्स ही ना हो. सो दैट इज व्हाई ही सेज कि ऐसे क्वेश्चंस जो तुम आंसर ना कर सको, दे आर बेटर देन ऐसे आंसर्स जो तुम पे इम्पोज किए गए हो जिसको क्वेश्चन करने के लिए तुम्हारे पास राइट्स ही ना हो. So अब तुम बताओ, the term questions mentioned are not subject to limitations imposed upon the freedom of speech and expression. Those questions are limited to the information warranted by the person. The court is referring to the right to information through the above quote. Questions are also subject to limitations imposed upon freedom of speech and expression. यहाँ पे क्वेश्चंस का मतलब क्या है? ऐसे क्वेश्चंस जो लेट्स से सिटीजंस उठा रही हैं जो गवर्नमेंट आंसर नहीं कर पा रही. इट्स बेटर देन द आंसर समथिंग व्हिच इज बीइंग इम्पोज्ड ऑन सिटीजंस एंड जिसको सिटीजंस क्वेश्चन ही ना कर पा रहे हैं. सो ये जो क्वेश्चन का मतलब है, मतलब बेसिकली इट मींस कि जो भी फ्रीली आस्क करना या फिर एक्सप्रेस करना. सो व्हिच ऑप्शन डू यू थिंक कम्स द क्लोजेस्ट टू बीइंग द करेक्ट आंसर? See, option 3 is of course ruled out. यहाँ पे right to information को refer कर रहा है, ये that's stretching it too far. Those questions are limited to the information warranted by the person. ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो person को information चाहिए हो उसी के लिए वो question पूछे. We have the right to and the freedom to ask questions about anything and everything. So tell me between 1 and 4, which one should be the correct option? Options 1 and 4. I hope you can hear me. At least if you can do that, say yes. Yes. All right. So which one do you think comes the closest to being the actual answer? तुम्हें क्या लगता है, तुम जो भी क्वेश्चंस पूछ रहे हो गवर्नमेंट को या किसी को भी, आर दे सब्जेक्ट टू सम लिमिटेशंस और आर दे सब्जेक्ट टू नो लिमिटेशंस? This is actually based on your knowledge of They are constitutional subject to Option A. they are subject to First. limitations. Yeah, very good. So it's option D. I mean, fourth option. The questions are also subject to certain limitations imposed upon freedom of speech and expression. Can anyone tell me what those limitations are? Like a few. Like defense related matters. Okay. If International it's Anything something that about, compromises national security or the relationships between other nations, the ones very, that infringe upon the religious rights of people. yeah, very good. Our national sovereignty pe koi questions and all. So these are the limitations imposed. It is an established principle of law that the offense of defamation harming the reputation has many exceptions, and that the imputation of truth is one of those. But the accused must prove that such imputation was true and also for the public good. In the light of this statement, which of the following questions or statements are not defamatory? इसका मतलब ये है, ये बोल रहा है कि लॉ में जो ऑफेंस ऑफ डेफेमेशन है, किसी के रेपुटेशन को हार्म करना, उसमें बहुत सारे एक्सेप्शंस है. अगर किसी ने ट्रू स्टेटमेंट दिया है, दैट्स आल्सो एन एक्सेप्शन, राइट? बट द अक्यूज्ड मस्ट प्रूव दैट सच imputation was true. मतलब जो बोल रहा है कि नहीं नहीं मैंने जो स्टेटमेंट दिया है, दैट्स एक्चुअली ट्रू, दैट्स व्हाई आई डोंट डिजर्व टू बी punished for it. So आपको ही प्रूव करना पड़ेगा कि your statement was true, right? And also for the public good. In the light of the statement, which of the following are not defamatory? मतलब इन One, चारों में से बताओ कौन सा defamation नहीं है. Okay, very good. The first option says कि अगर किसी public servant के unaccounted property. What does that mean, by the way? it's property that's like
Not it's registered property, it's I not guess. registered by his name. Yeah, the property is in such, मतलब क्या बोल सकते हैं, amount की that it actually exceeds their income proportionate to it, or Property something in which is, you lakhs. know, yeah, it has been attained in some kind of a shady manner, so unaccounted है. इसके लिए आपके पास कोई valid documents and all prove करने के लिए नहीं मिल रहा आपको. So अगर इसके about एक questionnaire कोई मतलब एक list of questions to for proposed for you to answer, and if someone publishes an article like that, that is of course not defamation because it is for the public good, right? बाकी तीनों चीजें, किसी को आप मैरिड मैन के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप के लिए क्वेश्चन कर रहे हो, किसी के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बारे में, कोई फीमेल पॉलिटिशियन को आप बी ग्रेड एक्ट्रेस बुला रहे हो, ये तीनों चीजें डिफेमेशन में आती हैं एंड दे आर नॉट एक्सेप्शंस हियर. द कोर्ट ऑर्डर द मर्जिंग ऑफ डिफरेंट एफआईआर्स. क्यों बताओ? जो अर्नब गोस्वामी के केस में वो सारे एफआईआर्स को एक क्लब करके मुंबई क्यों ले गए? The various options are multiple एफआईआर्स अगर होंगी तो हार्डशिप्स होंगे. फर्स्ट एफआईआर मुंबई में हुआ तो इन्वेस्टिगेशन वहीं होना चाहिए. अर्नब गोस्वामी मुंबई में रहते हैं तो इन्वेस्टिगेशन वहीं होनी चाहिए. मल्टीपल एफआईआर्स आर फ्रिवलस, ये ऐसा नहीं चाहिए एंड इसलिए सिर्फ एक ही कॉज ऑफ एक्शन है तो सारे क्लब कर लो. इनमें से कौन सा ऑप्शन सबसे ज्यादा यू नो वैलिड विथ लीगली एक अच्छा वाइब दे रहा है? बताओ. Option 1. वेरी गुड. मल्टीपल एफआईआर अगर होंगी, बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन होंगी एंड तुम कितने सिटीज घूमोगे उसके लिए, राइट? डी इज समथिंग की तो ये यू नो बहुत ओपिनियनेटेड हो गया. कीप इन माइंड, ऑलवेज अवॉइड सच ऑप्शंस व्हिच डू नॉट हैव मच लीगल टर्म्स इन इट. दे आर जस्ट यूजिंग योर इमोशंस एंड अपीलिंग टू देम. डेफेमेशन इज पनिशेबल एज, बताओ. ये 2020 था One. ना, तो उस वक्त या वेरी गुड, उस वक्त इनिशियली जस्ट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्टार्ट हुआ था. सो दे यूज्ड टू आस्क सम क्वेश्चंस लाइक दिस जो कि डिपेंडिंग ऑन योर प्रायर नॉलेज थे. ऑफ कोर्स दिस हैज नॉट बीन टॉक्ड अबाउट इन द पैसेज कि डेफेमेशन दोनों है या नहीं, क्राइम है या सिविल है, बट स्टिल यू ऑलरेडी नो अबाउट इट. बोथ ऑफ देम आर पॉसिबल. So now we'll talk about another tort which is called nuisance. What does nuisance mean? अगर आपके घर के साइड में कोई पार्टी कर रहा है 3 बजे तक एंड विथ एक्सट्रीमली लाउड म्यूजिक एवरी डे, राइट? सो दैट इज समथिंग व्हिच इज डिस्टर्बिंग योर हेल्थ. आप सो नहीं पा रहे हो. Infringing दैट इज upon a person's rights. very good. So it's something that is unreasonable and it's interfering with your rights. Rights over what? Over your own property or land, such as causing unnecessary noise, heat, smoke. ये सब तो common examples हो गए. Nuisance के दो types हैं, public and private. Public nuisance जो है, it's a crime. Crime और tort का मतलब तो I hope you have understood. Crime is a punishable offense and इसमें government case initiate करती है. You may have already heard about some award, public prosecutor. They are available to prosecute criminals who commit crimes such as those which have been laid out in the IPC. जबकि torts के केस में अगर तुम्हारा कोई प्रॉब्लम हो रहा है, such as in the case of private nuisance, you will be the person who is filing a lawsuit against that defendant to claim compensation. जबकि क्राइम अगर है to avoid multiplicity of lawsuit, मतलब let's say कि ऐसा कोई क्राइम हो रहा है पब्लिक न्यूसेंस कि entire neighborhood disturb हो रहा है, let's say thousands of people, of course all of them cannot file lawsuits to claim compensation against that particular defendant, right? So either obstruction is occurring of rights of many people, but none can file the case. Rather, the state will do so in case of a crime when the right of the general public is interfered with. जबकि प्राइवेट नुइसेंस में क्या होता है ना, अनरीजनेबल इंटरफेरेंस इज व्हिच इज ऑफ कोर्स अ कंटिन्यूइंग रॉन्ग. सिर्फ एक आइसोलेटेड इंसिडेंट, एक दिन रात के 2 बजे हो गए पार्टी करने के लिए, लाइक यू नो, इफ इट्स समथिंग as minor of a fact than that, it's a petty thing, it's an isolated incident, उस वक्त तुम केस नहीं कर सकते. बट अगर इंटरफेरेंस कोई प्राइवेट किसी एक ही इंसान के साथ हो रही है एंड उसको हार्म हो रहा है, देन दैट विल बी अ प्राइवेट नुइसेंस. नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नुइसेंस एंड ट्रेसपास. आपको पता होगा ट्रेसपास का मतलब क्या है. ट्रेसपासिंग ऑन माय प्रॉपर्टी मतलब you do not have the right to be here. You are making a direct physical interference with the plaintiff's possession of land. Plaintiff मतलब जो केस फाइल कर रहा है. सपोज मेरा गार्डन है and you are directly coming onto my garden and stealing my flowers. That is something which is trespass. So it's occurring through some material or tangible object. जबकि nuisance क्या है? Interference is consequential. मतलब आपको चाहे वो आपके घर में आके कुछ नहीं कर रहा, आपके प्रॉपर्टी को साथ फिजिकली इंटरफेयर ना करे, but still the interference which is occurring is consequential in the sense कि it's leading to certain consequences, such as आपके rights को violate करना. With plaintiffs, use or enjoyment of land without any interference with possession. See, चाहे वो आपके गार्डन में घुस के फ्लावर्स ना ले, अगर someone is what he is doing is
टॉक्सिक फ्यूम्स आपके गार्डन की तरफ कोई रिलीज कर रहा है, दैट मीन्स योर फ्लावर्स एंड योर प्लांट्स आर डाइंग अवे. So that means that person is interfering with the use or enjoyment of your land without an interference with possession. चाहे वो possession से ना करे, but आपके use के साथ वो interfere कर रहा है. Nuisance can be committed through some medium of intangible object like vibration, gas or noise, जबकि trespass usually tangible object. Tangible का मतलब क्या होता है? जिसको हम छू सकते हो and like you know physically देख सकते हो. Damages have got to be proved actionable per se. Trespass में prove क्या करना है damage. अगर कोई आपके प्रॉपर्टी में आ गया मतलब you have the right to start an action. जबकि यहाँ पे आपको प्रूव करना होता है कि आपको एक्चुअल में कोई डैमेज हुआ है. For example, here the three essentials are: there is an unreasonable interference. Interference is with use or of enjoyment of land. मतलब either the injury is to the property itself, either वो plants खराब हो जा रहा है, या फिर to the health or comfort of its occupants, या फिर ऐसा कुछ हो रहा है जैसे कि हम सो नहीं पा रहे रात को because of the noisy, इतना ज्यादा जोर से नॉइज. और एंड द थर्ड एसेंशियल इज देयर हैज बीन सम डैमेज. ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोई इफ यू कैन नॉट प्रूव कि तुम्हारे लिए कोई हार्म हो रहा है, यू कैन नॉट प्रूव कि न्यूसेंस का केस है. अब इसको पढ़ते हैं, ये केस है. So यहाँ पे एक पर्सन है, दो पर्सन हैं एक्चुअली. दे फाइल्ड अ लॉसूट अगेंस्ट राधे श्याम एंड अदर्स फॉर अ परमानेंट इंजंक्शन टू रिस्ट्रेन देम फ्रॉम इंस्टॉलिंग एंड रनिंग अ फ्लावर मिल इन देयर प्रीमाइसेस. Does anyone know what an injunction means? So stop from doing some things. Very good. So in the case of defamation also, there is an actually possible way to deal with it. There can be an injunction. मतलब कोर्ट ऑर्डर देता है कि तुम ये चीज नहीं कर सकते. A simple example would be a newspaper को कोई बोलना कि तो do not report on Prince Harry and Meghan Markle. Restraining Yeah. someone. वेरी गुड. सो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि आप इसके अगेंस्ट एक इंजंक्शन स्टार्ट करो सो दैट वो फ्लावर मिल ना कर सके हमारे मतलब प्रीमाइसेस में. या क्यों नहीं कर सकते? They said that the said mill would cause nuisance to the plaintiffs who are occupying the first floor position of the same premises, in as much as the plaintiffs would lose their peace on account of rattling noise of the flower mill. So हम रह रहे हैं फर्स्ट फ्लोर में, ये नीचे अगर फ्लावर मिल चलाएगा तो ये बहुत मतलब प्रॉब्लम्स होगा हमें. The health would be adversely affected. It was held that substantial addition to the noise in a noisy locality by the running of the impugned machines seriously interfered with the physical comfort of the plaintiff, and as such it amounted to प्राइवेट नुइसेंस. लेट्स सी, मतलब अगर ये इतना ज्यादा जोर होता कि पूरा एंटायर पब्लिक को सपोज प्रॉब्लम होता. लेट्स से अ केमिकल फैक्ट्री प्लांट हैज स्टार्टेड अ फैक्ट्री इन अ रेसिडेंशियल नेबरहुड. दैट्स ऑफ कोर्स, उसके लिए तो बहुत सारे अलग क्राइम्स भी होंगे, बट अंडर टॉर्ट्स आल्सो यू कैन फाइल अ क्लेम फॉर पब्लिक नुइसेंस इन दैट केस. क्यों? क्योंकि एक एंटायर सिटी का नेबरहुड बोल रहा है कि वी आर फेसिंग दीज फ्यूम्स, बट प्राइवेट नुइसेंस मतलब आपको ही प्रॉब्लम हो रहा है सिर्फ. ठीक है. We'll talk about the next one, which is the probably the second last tort of today. It's called negligence. It's a bit lengthy. So negligence का मतलब क्या है? Failure to use ordinary care through either one's actions or lack of action, resulting in damage to someone in one way or another. किसी के लिए आपको कोई ड्यूटी ऑफ केयर है, आप उस ड्यूटी ऑफ केयर को ब्रीच कर रहे हो, एंड दैट्स व्हाई दैट पर्सन इज फेसिंग डैमेजेस. उस वक्त वो नेग्लिजेंस बोला जाता है. मतलब आइदर यू आर डूइंग सम एक्शंस जिसमें आप केयरफुली नहीं कर रहे हो जितना केयर एक रीजनेबल पर्सन लेना चाहिए, और यू आर एक्चुअली नॉट डूइंग समथिंग, यू आर ओमिटिंग अ टास्क व्हिच यू शुड हैव डन. दैट्स कॉल्ड नेग्लिजेंस. ठीक है. नेग्लिजेंस के लिए प्री रिक्विजिट्स क्या है? फर्स्ट इज देयर मस्ट बी अ ड्यूटी ऑफ केयर. लेट्स से मैं रास्ते पे चल रहा हूं, आई डू नॉट ओ अ ड्यूटी ऑफ केयर टू यू कि मैं गाड़ी बहुत जल्दी से चलाऊं बिकॉज यू वांट टू रश समवेयर, राइट? सो तुम मेरे लिए ऐसा केस नहीं फाइल कर सकते ही वाज ट्रैवलिंग टू स्लो एंड आई वाज गेटिंग अफेक्टेड बिकॉज ऑफ इट. आई डू नॉट ओ अ ड्यूटी ऑफ केयर टू यू. The defendant must owe a legal duty of care towards the plaintiff. Let's say an old lady is standing and she's waiting to cross the street. Perhaps you have a moral duty to help her cross the street, but you do not have any legal duty to do so. That's why that lady cannot file a case against you कि ये negligent था, he or she did not take care of me, right? So that must merely careless होना behavior, वो negligence नहीं होगा. जब तक there must be a duty of care, that duty is legal. अगर उसको तुम ओ कर रहे हो एंड फिर उसको ब्रीच कर रहे हो, आगे जाके देखेंगे. दैट्स द फर्स्ट प्रीरेक्विजिट. कैसे ड्यूटी ऑफ केयर होगा या नहीं होगा पता चलेगा तुम्हें. Relationships such as those between co-workers, fellow road users. Fellow road users मतलब क्या? अगर तुम किसी के साथ एक्सीडेंट कर लेते हो तब यू विल बी लाइबल फॉर नेग्लिजेंस. नेग्लिजेंस मतलब लेट्स से तुम ठीक से रोड को देख के नहीं चला रहे थे, किसी को तुमने एक्सीडेंट करवा लिया. मतलब फॉर एग्जांपल यू हिट समवन्स कार. सो दैट मीन्स पहले तो वो नेग्लिजेंस के लिए डैमेजेस क्लेम कर सकता है, फिर वो देखेगा और क्या क्राइम्स हो सकता है.
A doctor and patient, medical negligence is an important part. We'll read about it as well. A manufacturer and consumer. कोई manufacturer cold drinks बना रहा है, so they also owe a duty of care to the consumers, right? अब इसमें हम देखेंगे और एक केस, रेल रोड कॉर्पोरेशन एंड बोरहिल वर्सेस यंग. सो इन दिस केस द प्लेंटिफ जो केस फाइल की है, शी इज अ फिशर फोक लेडी. उसने क्या किया, वो ट्रैम से उठी एंड वाइल शी वाज एंगेज्ड इन रिमूविंग द फिश बास्केट फ्रॉम द ड्राइवर्स प्लेटफॉर्म, साइड में ट्रैम कार के एक स्पीडिंग मोटरसाइकिल जा रहा था एंड वो कोलाइड कर गया किसी के साथ एंड वो मर गया. ये जो फिशर वाइफ थी जो फिश निकाल रही थी बास्केट से, she had not seen the motorcyclist or the accident which occurred about 50 feet ahead of her tram car. But उसने ना वो नॉइज सुनी कि कुछ एक हुआ मेरे पीछे या मेरे आगे. Later, after the motorcyclist's dead body had been removed, she approached the spot and saw the blood left there. वो आई और देखी कि एक्सीडेंट शायद हुआ था, यहाँ पे ब्लड बहुत सारा गिरा हुआ है. In consequence, she sustained a nervous shock and after 1 month gave birth to a stillborn child. मतलब she was pregnant. When she saw that much blood lying there, she sustained a nervous shock and एक महीने के बाद stillborn child का मतलब क्या होता है बताओ? So in this case, Dead. there was no, Dead yeah, infant. say, yeah, मतलब the person is Not not moving body. moving and they are dead when they are being birthed. So the plaintiff जो है, मतलब जो lady थी, see, she sued the motorcyclist's executor and said कि मुझे पैसे दो, compensate करो. जबकि that person did not owe any duty of care towards the fisher wife and he was not negligent towards her. She herself chose to go there and saw the blood and then sustained a nervous shock, right? So there was no duty of care established in this case. अब ये एक अच्छा केस पढ़ेंगे हम, विच इज कॉल्ड डोनाग्यू वर्सेस स्टीवेंसन. ये क्या करता है, ये अब एक्सपैंड करता है स्कोप ऑफ ड्यूटी को. विल रीड अबाउट द स्टोरी. यहाँ पे क्या हुआ था ना, लेट्स से तुम दो दोस्त हो, तुम गए हो एक बार को, यहाँ पे द योर फ्रेंड हैज बॉट अ जिंजर बियर फॉर यू फ्रॉम दैट बार. द बियर was bought by your friend, but you were the one who was drinking it, right? The appellant tracked some of the contents, and when she poured the remaining content into the glass, it included the decomposed body of a snail. मतलब तुमने नहीं खरीदा, तुम्हारे दोस्त ने खरीदा तुम्हारे लिए. You were drinking it. After drinking half, you tried to pour it into another glass, और उसमें तुमने देखा कि एक snail का body गिरा हुआ है. जो appellant तुम हो, you tried to file a lawsuit against the defendant, मतलब शायद उस बार के against, for damages caused to her by drinking the contaminated beverage. The defendant pleaded that he did not owe any duty of care to the plaintiff because the bottle was sold to the friend of the appellant. The bar वाला owner said कि हमने तो तुम्हारे दोस्त को भेजा था, तुम कैसे केस फाइल कर सकती हो पी के, because we do not owe any duty of care to you. He pleaded the appellant was a stranger to the contract. So this is something जो कि हम last time भी पढ़े थे about privity of contract and tortious liability. Privity of contract का मतलब कोई बता सकता है मुझे? मतलब the contract is between two people and no third party can file a lawsuit about that, right? इधर वो बोल रहा है कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट तो सिर्फ जो दोस्त थी उसके साथ था, so there was no contract with that friend of yours, मतलब तुम्हारे साथ जो appellant है. But the court, what it ruled was, they rejected the contention and held the manufacturer owed a duty to any consumer to take reasonable care, and said that the answer is that there are persons who are so closely and directly affected by my act. मतलब तुम्हें ये realize करना चाहिए, there are people जो कि मेरे action से इतने closely and directly affected हैं that I ought to reasonably have given them in contemplation and as so being affected. So see, अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ, I must have kept them in mind, in reasonable mind, काम वो करते वक्त. Even though वो person तुम्हारे से directly नहीं खरीदा था, you still owe a duty to any consumer, right? So you are negligible for your negligent act towards the consumer. Did everyone understand this? कि duty of care को expand कैसे किया गया इस case में? Even though the contract, let's say, was between the shopkeeper and the person who bought it, your friend, but that does not mean कि तुम नहीं file कर सकते compensation के लिए claim. Furthermore, a defendant's duty to take care depends on the reasonable foreseeability of the injury which may be caused to the plaintiff on breach of duty. This foreseeability depends upon two considerations. मतलब see, ऐसा भी तो है कि वो duty of care कितने तक करे, कितने तक उसको पता हो कि मुझे ये करना चाहिए. That's also a matter, right? So जब तक वो reasonably foreseeable हो,
अगर तुम्हें कोई बेवरेज सर्व कर रहा है, ही और शी मस्ट रीजनेबली नो कि ये बेवरेज हेल्दी है, इसमें कोई ऐसा कुछ कंटेंट नहीं है जो तुम्हें हार्म ना करे. दैट इज व्हाट रीजनेबल फोर्सिबिलिटी मींस. मतलब व्हाट अ रीजनेबल मैन वुड हैव फोरसीन, in what way would he have behaved to avoid the injury to the plaintiff. अगर तुम ये कर रहे हो, that is what you are upholding your duty of care. अब ये जो ड्यूटी ऑफ केयर फर्स्ट प्रीरिक्विजिट थी, इसको अगर तुम ब्रीच करोगे तभी ये नेग्लिजेंस क्लेम में आएगा. Did everyone understand that? Breach of duty मतलब non observance of due care required in a particular situation. कैसे? To determine the standard of care, दो तीन चीजें सुनो. First is importance of the object to be attained. तुम जो काम कर रहे हो वो कितना important है. Magnitude of risk कितना है. The amount of consideration for which of services are offered. Let's say तुम एक डॉक्टर के पास गए हो, उस डॉक्टर को एक सर्जरी करनी है बस, जो कि बहुत माइनर सर्जरी है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो स्टैंडर्ड ऑफ केयर ना थोड़ा कम होगा. अगर रिस्क भी कम है तो वो भी कम होगा. अगर तुम पैसे भी कम दे रहे हो देन तो भी कम होगा, राइट. दीज आर ऑल टेकन इनटू कंसीडरेशन व्हाइल डिसाइडिंग कि कितना कॉम्पेंसेशन देना चाहिए. लेकिन लेट्स से यू आर गोइंग फॉर अ हार्ट सर्जरी जो कि इतना इंपॉर्टेंट है, द ऑब्जेक्टिव इज सो इंपॉर्टेंट, रिस्क कैरीड विद इट इज एनॉर्मस, एंड तुम भी बहुत ज्यादा पे कर रहे हो उसके लिए, सर्विस के लिए, देन द ऑफ कोर्स द ड्यूटी ऑफ केयर, द स्टैंडर्ड ऑफ केयर इज मच हायर. जब तक वो ड्यूटी ऑफ केयर नहीं कंप्लीट कर लेता तब तक तुम फाइल कर सकते हो नेग्लिजेंस का क्लेम. ठीक है. अब थर्ड पॉइंट इज प्रीरिक्विजिट इज डैमेजेस. द डिफेंडेंट्स ब्रीच ऑफ ड्यूटी मस्ट हैव कॉज्ड सम डैमेज. लेट्स से डॉक्टर ने कोई गलती कर ली सर्जरी के वक्त, बट ही क्विकली रेक्टिफाइड इट एंड तुम्हें कोई डैमेज नहीं मिला, मतलब यू डू नॉट हैव एनी फिजिकल डैमेज, सो दैट्स ऑफ कोर्स यू कैन नॉट फाइल एनी केस अबाउट दैट. ये डैमेज भी जो है ना वो बहुत ज्यादा रिमोट नहीं हो सकता. मतलब लेट्स से तुम आए मेरे पास चेकअप के लिए, आई यूज्ड अ थर्मोमीटर टू चेक योर फीवर, राइट. तुम्हें 4 मंथ्स के बाद कोई बुखार या कुछ हो रहा है एंड यू आर थिंकिंग कि वो थर्मोमीटर में जर्म्स थे, राइट. तुम ऐसे बोल रहे हो, सो ऑफ कोर्स यू कैन नॉट से कि इतना ज्यादा दूर की चीज इससे हुई है. That must not be too remote a consequence of the defendant's negligence. We'll talk about remoteness of damages in depth in next class. Res ipsa loquitur is a Latin maxim. इसके पहले ये बता दो negligence का basic सब समझ गए या फिर कोई डाउट है? Yeah, yes or no, please. सुनाई तो दे रहा हूं ना. Would the recording of a speech having false rumors come under slander or libel? It will come under slander. Libel means some kind of a written thing, written communication. So yeah, I was saying ki, are you clear with the basics of negligence? I will move to res ipsa loquitur, which is a maxim. Yeah, thank you. Okay, so here we'll talk about this rule जहां पे the rule says the thing speaks for itself. इसका मतलब ये है कि देखो नेग्लिजेंस को प्रूव भी तो करना पड़ेगा ना. कौन दिखाएगा कि एक ड्यूटी ऑफ केयर था, जिस ड्यूटी को ब्रीच किया गया, जिस ब्रीच की वजह से आई हैड टू फेस दीज डैमेजेस, दैट इज व्हाई आई शुड बी गिवन दिस मच कॉम्पेंसेशन. ये सारी चीजें जो है ना, द प्रूफ ऑफ दिस एज अ जनरल रूल इट इज फॉर द प्लेंटिफ टू प्रूव दैट द डिफेंडेंट इज लायबल फॉर नेग्लिजेंस. जो केस फाइल कर रहा है जनरली उसे प्रूव करना होता है कि जिसके अगेंस्ट वो केस फाइल किया गया है, दैट डिफेंडेंट ओड अ ड्यूटी ऑफ केयर व्हिच ही ब्रीच्ड एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ व्हिच आई एम सफरिंग दिस डैमेज. जबकि इन दिस केस रेस इप्सा लोक्विटोर द एक्सेप्शन इज देयर. एक्सेप्शन क्या करता है कि इट शिफ्ट्स द ओनस ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ टू द डिफेंडेंट इन सर्टेन इंस्टेंसेस. मतलब जिसके अगेंस्ट तुम नेग्लिजेंस का केस फाइल कर रहे हो, दैट पर्सन हैज टू प्रूव कि वो सच में नेग्लिजेंट नहीं था. क्यों? ये सिर्फ कुछ इंस्टेंसेस में होता है जहां पे ये मैक्सिम अप्लाई हो सके. Those instances are, we'll talk about it here. Direct evidence of negligence, however, is not necessary always. The same may be inferred from the circumstances of the case. कभी कभी जो सिचुएशन है, जो केस है, उसके circumstances से ही पता चल जाता है कि negligent था कोई. But when the plaintiff fails to establish a prima facie case, either by direct or circumstantial evidence that defendant was negligent, the plaintiff's action must fail. There is a presumption of negligence accordingly to the maxim res ipsa loquitur, which means the thing speaks for itself. When the accident explains only one thing, and that is that accident could not have ordinarily occurred unless the defendant had been negligent, the law raises a presumption of negligence on the part of defendant. आई थिंक सबको पता होगा कि इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी एक चीज है, इट्स समथिंग दैट्स फॉलोड एवरीवेयर.
You are innocent until the trial has ended and finally the conviction has arrived. मतलब guilty तुम prove कर चुके हो by the jury or the judge. तब तक तुम innocent presume किए जाओगे. The benefit of doubt is given to you. But in this case, तुम्हें negligent बता दिया जाएगा अगर the situation is such that उस केस में जो harm हुआ, the damage which occurred, it actually could not have occurred without the someone being negligent, right? अगर कोई ordinary care follow किया होता तो वो नहीं होता. In such a case, it is sufficient for the plaintiff to prove accident and nothing more. The accident may, however, avoid his liability by disproving negligence on his part. Let's say जो defendant है वो चाहे वो अब दिखा सकता है कि सच में वो negligent नहीं था, लेकिन अब onus of burden of proof दिखाना उसके ऊपर shift हो गया है. For the maxim res ipsa loquitur to apply, it is also necessary the event causing the accident must have been in control of defendant. Example से समझते हैं. तुम किसी बिल्डिंग के साइड में चाह रहे हो जहां पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है एंड वो कंपनी बहुत सारे ब्रिक्स रखी है उस कंस्ट्रक्शन चलने वाले बिल्डिंग के टेरेस पे, राइट? सो अगर वो सिक्योरली नहीं रखी है, द ब्रिक्स कैन फॉल डाउन. अगर वो गिर गया, तुम्हारे ऊपर गिर गया, यू हैव बीन इंजर्ड, इफ दैट इज इंजर्ड अ पेडेस्ट्रियन, द कंपनी विल बी लायबल फॉर नेग्लिजेंस इवन दो नो वन सॉ द ब्रिक्स फॉल. यहाँ पे द बर्डन ऑफ प्रूफ विल नॉट बी ऑन दिस पेडेस्ट्रियन की आई हैव टू शो कि हाँ उनके पास ड्यूटी ऑफ केयर था, हाँ उन्होंने ब्रिक्स गिरा के रीच किया एंड मुझे ये डैमेज फेस किया. नो, हियर द सिचुएशन, द सर्कमस्टांसेस ऑफ द फैक्ट आर सच दैट ये एक्सीडेंट ऑर्डिनरली हो ही नहीं सकता था unless the defendant had been negligent, and if they have been negligent they will have to pay compensation for it. So either the law raises a presumption of negligence on the part of the defendant. Is everyone clear with the maxim? Yes or no, I have a people? doubt. I have a doubt. Yeah, sure. Is it applicable in the cases of motor vehicles like the Pune Porsche case? In the Pune Porsche case, actually that case becomes a lot more than just negligence. See, as I told you, in some cases there will be an overlap. That case involves a plethora of crimes, such as drunk driving, secondly, without driving license, underage driving. So, thing is, a lot of these cases get overshadowed by that. But yes, चाहे तो उनके घर वाले torts के अंदर भी फाइल कर सकते हैं about negligence. ठीक है? Okay. Like, just left the Pune Porsche case, a normal boy of 17 years old age who is having learning license. By negligence of his driving, he crashes his scooty or bike in a lady. Then it will be res ipsa loquitur, no? Yeah, because Burden to prove the that's kind of an negligence. obvious case कि negligence क्या है, उसमें तो बहुत सारे crimes भी first of all charge होंगे, right? और ये भी हो जाएगा, मतलब of course the burden would be on them कि मैं negligent नहीं था to show करना, वरना तो ये ordinarily होता ही नहीं अगर they had taken ordinary care, right? Okay. If someone is driving and trying their best not to hit someone and फिर कोई accident वैसा होता है, तब वो केस चल सकता है कि नहीं I was actually not negligent. लेकिन if someone is obviously drunk and मतलब you know इतने सारे proof हैं, तो of course that will be res ipsa. डिफेंस अगेंस्ट नेग्लिजेंस, अगर अगर कोई तुम्हारे अगेंस्ट नेग्लिजेंस का केस उठाए तो तुम क्या डिफेंस अवेल कर सकते हो? एक है जो कि है कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, मतलब जो केस तुम्हारे अगेंस्ट फाइल किया है ना डिफेंस नेग्लिजेंस के लिए, यू कैन क्लेम कि जो फाइल कर रहा है द प्लेंटिफ इज आल्सो पार्शियली लायबल फॉर इट. मतलब व्हेन द प्लेंटिफ बाय हिज ओन वांट ऑफ केयर, जो केस फाइल किया है वो खुद भी थोड़ा केयरलेस था and therefore he contributed to the damage caused by negligence or wrongful conduct of the defendant, he is considered to be guilty of contributory negligence. To avail this defense, the defendant has to prove that the plaintiff failed to take reasonable care of his safety, which became a contributing factor to the harm. For example, एक overcrowded bus थी, like there were so many people on it. The conductor invited passengers to travel on its roof. All right, वो कंडक्टर तो बुला दिया, ये लोग चले भी गए, ड्राइवर भी इग्नोर कर दिया कि पैसेंजर्स रूफ में हैं और ही ट्राई टू ओवरटेक अ कार्ट. जब वो स्वर्व किया, मतलब यू नो सडनली द बस वाज मूव्ड टू द राइट फॉर द पर्पस and went on the kacha road. A passenger sitting on the roof was hit by a branch of a tree. He fell down and received severe injuries and then died. मतलब जो ऊपर बैठा था वो गिर के मर गया. It was held that both the driver and the conductor were negligent towards the passengers, no doubt, who were invited to sit on the roof. But there was also contributory negligence on the part of the passengers, including the deceased, who took the risk of traveling on the roof of the bus. Get it? Another case is there for it to explain. Butterfield versus Forrester. यहाँ पे फॉरेस्टर जो है what he did was वो एक पोल को across a road बिछा दिया. So as after he laid it out, Butterfield was driving on that road at a high speed during twilight. Twilight मतलब either dusk or dawn, so अंधेरा का समय था.
सो वो ऑब्वियसली देख नहीं पाया बिकॉज वो इतने हाई स्पीड में चल रहा था, उसका दिमाग अटेंशन भी नहीं था रोड पे. ही हिट द पोल एंड सफर्ड पर्सनल इंजरीज. The court ruled the Butterfield was also contributory negligent as he would have been able to see the pole had he acted with ordinary prudence. अगर तुम एक नॉर्मल एवरेज स्पीड से आ रहे होते तो तुम दूर से पोल को देख सकते होते, बट सिंस ही वाज आल्सो नेग्लिजेंट, यहाँ पे उसको जो डैमेजेस मिलने चाहिए थे उसमें ना कुछ डिस्काउंट कर सकते हो. मतलब कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस का डिफेंस तुम अवेल करके यू कैन रिड्यूस द डैमेजेस टू बी अवॉर्डेड टू द प्लेंटिफ, डिस्काउंटिंग द कॉम्पेंसेशन, टेकिंग इनटू रिगार्ड द प्लेंटिफ्स ओन केयरलेसनेस. उसने खुद भी कंट्रीब्यूशन किया है इस नेग्लिजेंट एक्ट के हार्म्स को. ठीक है, इज एवरीवन क्लियर अबाउट इट? Yes, Yes, clear. sir. Now we'll talk about medical negligence. We've all heard of cases, right? कि कोई इंस्ट्रूमेंट किसी के सर्जरी के बाद पेट में रुक गया, like scissors and all. So that's where medical negligence comes into play. Because वहां पे वो crime नहीं बोल सकते तुम, ये negligence है because the doctor owed a certain duty of care जिसको वो uphold नहीं किया, and that's why you faced damages. So पढ़ते हैं passage को. Every person who enters into a particular profession undertakes to bring to the exercise of it a reasonable degree of care and skill. So make a note कि ये negligence सिर्फ medical sector में नहीं है. There is something called professional negligence. As a lawyer also, your client can file a case of negligence against you if you have breached the duty of care that you owe to your client, right? So every profession में you need a particular level of learning to be professional, and this implies कि तुम कर सकते हो वो सारी चीजें ठीक से. अगर तुम कर सकते हो तभी तो लोग तुम्हें ट्रस्ट करके तुम्हारे पास आएंगे. सो इट अश्योर्स द पर्सन डीलिंग विद हिम दैट द स्किल व्हिच ही प्रोफेसेस टू पोजेस. तुम बोल रहे हो कि तुम एक डॉक्टर हो, तुम शो कर रहे हो अपनी डिग्री, मतलब यू आर प्रोफेसिंग कि हाँ मुझे इतना सब आता है. shall be exercised and exercised with reasonable degree of care and caution. तो जो भी तुम्हारे पास आएगा they will expect कि you are doing so, तुम्हारे skills को use कर रहे हो and reasonably अच्छे से care and cautious होके. A medical professional does not assure his patient of the result, no doubt. कोई भी मेडिकल प्रोफेशनल ऐसा नहीं बोलता कि 100% मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा. There is always a chance for some things to go wrong. A surgeon cannot and does not guarantee the result of surgery would be invariably beneficial, much less to the extent of 100% what the person operated on. But the assurance which you can give is the implication that तुम्हारे पास सारे requisite skills हैं उस branch of profession में which you are practicing, and while undertaking the performance of the task entrusted to him, he would be exercising his skill with reasonable competence. At least इतना तो तुम्हारे duty of care है जो कि implied है already. This is what all the person approaching the professional can expect. Judged by this standard, a professional may be held liable for negligence on one of the two findings. Either he was not possessed of the requisite skill which he professed to have possessed. मैंने बोल दिया कि मैं ये सर्जरी कर सकता हूं जबकि मुझे पता ही नहीं है स्कैल्पल का मतलब क्या होता है या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट्स कैसे चलानी होती है, और तुमने किया सर्जरी बट यू वर वेरी रैश थ्रू इट, यू आर हरीड, तुम्हारा मन कहीं और था एंड यू डिड नॉट गिव मच अटेंशन टू इट, जिसकी वजह से किसी को डैमेज फेस करना पड़ रहा है. So you did not exercise with reasonable competence in the given case. A person who holds himself out ready to give medical advice and treatment impliedly undertakes that he is possessed of skill and knowledge of the purpose. Such a person, when consulted by a patient, owes him certain duties. So, तीन duties होते हैं इस doctor-patient relationship में. A duty of care in deciding whether to undertake his case. तुम्हारे पास choice है as a doctor to choose whether you are going to take upon this case or not. अगर तुम choose कर रहे हो मतलब you are implying कि तुम्हें आता है वो skill, तुम्हारे पास है वो करने को. A duty of care in deciding what treatment to give. Of course, any course or any sort of a disease can follow lots of different types of treatment procedures. कोई medicine तुम recommend कर सकते हो, and ये तुम्हारा भी duty of care है to ensure कि तुम वो medicines या फिर treatment process ऐसा recommend करो जो कि अच्छे से काम करे. Third duty is to administrate that treatment properly. Medicine का dosage ठीक से देना या surgery ठीक से करना. These are the three duties. A breach of any of these duties gives a right of action for negligence to the patient. Medical negligence can today be considered to be a wing of negligence as tort. With the growing number of cases of medical negligence, it has acquired itself attention of the lawmakers. Recently, there has been a major increase in the cases of gross medical negligence, which calls for some immediate strict laws to be made in this regard. अब ये और एक चीज है जो पढ़ लेंगे, फिर ये लास्ट स्लाइड है आज का. Malicious prosecution. Malicious का मतलब तुम बोले कि इल इंटेंशन से. Prosecution मतलब किसी के अगेंस्ट लॉ सूट फाइल करके उन्हें ट्राई करना कि पनिशमेंट मिले. पनिशमेंट मिल सकता है, जेल टर्म या फिर कॉम्पेंसेशन. सो मलिशियस प्रोसिक्यूशन का मतलब ये है ऐसी प्रोसीडिंग स्टार्ट करना किसी के अगेंस्ट जिसके अगेंस्ट तुम्हारे पास वो करने के लिए कोई वैलिड केस ना हो. सबसे कॉमन है कि लेट्स से देयर इज एंटी डाउरी लॉ, बट द ब्राइड हु इज देयर, द घर की बहू
she is filing this case without any reasonable cause, only to vex her in-laws, or for example the false allegations of sexual assault. So of course these are crimes which are serious, and the honest cases should be taken seriously. The accused, the criminals, should be put behind bars. But if someone is misusing these provisions, that's equally horrible, because you are dragging someone who is innocent into this mess. So malicious prosecution consists in instigating judicial proceedings, usually criminal, against another maliciously and without reasonable and probable cause, which terminate in favor of that other, and which results in damage to his reputation, personal freedom, or property. Let's say I filed a case against my against someone, accusing them of sexual assault, and that person is actually innocent. They actually were acquitted after the case got over. They were found not guilty, and कोई reasonable cause ही नहीं था मुझे वो case file करने का. Now that person has the right to initiate the lawsuit for availing compensation from me for the damage I caused to his reputation, for the days he may have spent in jail, deprived of his personal freedom. So अभी वो malicious prosecution का tort start करके मेरे against कर सकता है file case. ठीक है. Remember, I filed a criminal case against him, जो कि he was found not guilty, and उसमें और कोई essential elements भी हैं, पढ़ेंगे. उसके बाद वो मेरे अगेंस्ट एक टॉट के अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है. ठीक है. So the essential are: the prosecution must have been there of the plaintiff by the defendant. There must have been want of reasonable and probable cause for that prosecution. Want मतलब नहीं होगा, कोई reasonable और probable cause था ही नहीं. The defendant must have acted maliciously. सुनो, अभी plaintiff और defendant कौन है समझ रहे हो, right? वो केस खत्म हो गया. अभी plaintiff है जो कि केस फाइल कर रहा है कि मुझे इतने पैसे वापस दो, तुमने मेरे अगेंस्ट फॉल्स केस फाइल किया था. और अभी डिफेंडेंट है जिसने प्रीवियसली केस उसके अगेंस्ट फाइल किया था मैलिशियस प्रोसिक्यूशन करके. सो अभी वो प्लेंटिफ को प्रोसिक्यूट किया जा रहा है वापस से टॉर्ट्स की वजह से, एंड उसके लिए डिफेंडेंट जो है, सॉरी, जो पहले केस फाइल किया था वो अभी डिफेंडेंट बन गया है, राइट? सो ही और शी जिसने वो फॉल्स केस फाइल किया था, दे मस्ट हैव एक्टेड मैलिशियसली विद एन इम्प्रॉपर मोटिव एंड नॉट टू फर्दर द एंड ऑफ जस्टिस. उनका एम वैसा कुछ नहीं था, पर्सनल वेंडेटा था या फिर ऐसे कोई राइवलरी के लिए था. The plaintiff must have suffered damages as a result of the prosecution. मतलब तुम जो अभी केस फाइल कर रहे हो about कि मुझे compensation चाहिए, you must have suffered some damage. The prosecution must have terminated in favor of the plaintiff. मतलब तुम acquit हुए होगे, तुम्हें not guilty find किया गया है, मतलब you were actually not obviously liable to be behind bars or to pay anything for that previous वाला proceeding. So अभी तुम ये case start कर सकते हो against that previous person. To be actionable, the proceedings must have been instigated actually by the defendant. If he merely states the fact that he believes them to be a policeman or a magistrate, he is not responsible for any proceedings which might ensue as a result of such action by such policeman or magistrate on his own initiative. इसका मतलब ये है कि देखो, जिसके अगेंस्ट तुम अभी मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का केस फाइल कर रहे हो ना, जिसको तुम अक्यूज कर रहे हो कि उसने मेरे अगेंस्ट फॉल्स केस फाइल किया था जिसकी वजह से मुझे ये हार्म हुआ, वो होने के लिए, तुम्हारा मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का सूट सक्सेसफुल होने के लिए, जिसके अगेंस्ट तुम वो कर रहे हो, वो पर्सन एक्चुअली खुद होना चाहिए जो कि इंस्टिगेट किया हो प्रोसीडिंग्स. लेट्स से सम पर्सन फाउंड सम काइंड ऑफ अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ही गोज टू अ पुलिसमैन और अ मैजिस्ट्रेट एंड सेज कि आई थिंक कि ये बंदा ऐसा ऐसा कर चुका है, एंड उसके बाद वो पुलिसमैन खुद एक्शन लेके तुम्हें अरेस्ट कर रहा है, एंड देन दे आर इनिशिएटिंग द एवरीथिंग अगेंस्ट यू. दैट विल नॉट बी अ केस ऑफ मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, बिकॉज जो है वो प्रीवियस वाला फॉल्स केस, दैट वाज नॉट एक्चुअली इंस्टिगेटेड बाय द पर्सन हु इज नाउ द डिफेंडेंट, राइट? सो अभी वो एक्शनेबल नहीं होगा. डज एनीवन हैव एनी डाउट्स फ्रॉम टुडेस सेशन? बताओ. अब हम टॉट्स का इतना कंप्लीट किए हैं, स्पेसिफिक टॉट्स. In the next class, when I take about it, I'll talk to you about strict and vicarious liability, absolute liability, and a few other principles like, about proximate things, about, remoteness of damages, किसको कितना damages देना चाहिए, वो सारी चीजें करेंगे. But the bulk of torts is over. I talked to you about general defenses of torts and various types of torts. So tell me, what are the types of torts we talked about today, the major torts? Yeah, just tell me like one by one if you remember any. Defamation, nuisance, Very good. malicious Medical negligence. false Yeah. imprisonment, Yeah, very good. So we talked about first battery, then assault, then false imprisonment. We talked about defamation. We talked about negligence, nuisance, malicious prosecution.
ठीक है? So that's it for today's session. Thank you so much for joining. If you have any doubts, you can go ahead and ask me now. Otherwise, I'll just end the session here. Thank you so much for joining. I hope you keep studying and all the best for your preparation. Yeah, can we get PDF of this session, like of the material for revising Sure, things? sure. I'll share it to you. Okay, thank you.